हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। इस वीडियो पर मैं बात करूंगा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का ऑल इवेंट्स, मूवमेंट्स, फैक्ट, जितने भी फैक्ट है, इवेंट है, सब इस वीडियो में एक वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो में और मैं बनाऊंगा पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। इम्पोर्टेंस, इवेंट्स, मूवमेंट्स, एसएससी। इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम हेल्प होगा, जैसे एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीएस, रेलवे, एनडीए, एसपीएस। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। पहला इवेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1857। इस वार को आपका सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। देखिए, इस वार शुरू किया था मंगल पांडे वाज एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी एंड इट इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द की फिगर बिहाइंड सिपाही म्यूटिनी। इस वार लाने के लिए जिनका भी बहुत सारा लोग था, उसका साथ भी एक मंगल पांडे था, जो उसका मंगल पांडे को जब एक राइफल दिया तो उस राइफल में दो ही फिगर था, एक चर्बी था, उसका काव और पिक का था, इसलिए दोनों कास्ट के साथ डिवाइड हुआ था, इसलिए इस वार हुआ था। उसका बात है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एंड ऑफ द रूल बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफरिंग टू रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। 1858 का जो इवेंट है, इस इवेंट का बाद आपका ब्रिटिश कंपनी का रूल्स ट्रांसफ़र होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी क्राउन के पास गया था। ठीक है, और अगली है 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अलाउ इंडियन एंट्री टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद 3 इंडियन को इंडियन काउंसिल में अलाउ किया था, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ महाराजा पटियाला और सर दिनका राव। ठीक है, याद रखना। अगली है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ था। 28 दिसंबर 1958 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय गोलदास Tezpal Sanskrit College in Bombay in the presence of the 72 delegates founded by Arnold Octavian Humes और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन का तरफ से था उमेश चंद्र बनर्जी। अगले है 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था कब? 1905 में। और किसका द्वारा हुआ था? लॉर्ड कार्जन की प्रेयर से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशिएटिव स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905 में स्वदेशी मूवमेंट बंगाल पे हुआ था। ठीक है, स्वदेशी बाइकॉट इसकी फॉरेन बाइकॉट्स। 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेशन हुआ था, पॉपुलरली नोन एज मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड 13 दिसंबर 1906 बाय आगा खान थ्री एंड Mohsin's Mulk in Dhaka, British India, now in Bangladesh. अगले है 1907 सूरत स्प्लिट। Indian National Congress was divided into 2 groups. इंडिया भारतीय जातीय कांग्रेस 2 ग्रुप में डिवाइडेड हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत स्प्लिट सेशन was presented by रासबिहारी बुश। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हुआ था 1909 में, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम। इस रिफॉर्म के बाद मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल मिला था। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर मुस्लिम। फादर कम्युनल अवॉर्डेड्स इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। अगले है 1911 में हुआ था कैंसिलेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन। बंगाल जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, वो कैंसिल हुआ था। इंडियन कैपिटल शिफ्टेड कोलकाता टू दिल्ली। इंडियन कैपिटल दिल्ली कोलकाता था। 1911 का बाद दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। जाना गाना माना वाज फर्स्ट सॉन्ग इन कोलकाता सेशन 19 इंडियन नेशनल कांग्रेस
से visit of King George B to India. अगली है 1913 रविंद्रनाथ टैगोर win Nobel Peace Prize in Literature. अगले 1914 to 1918 First World War. अगले 1950 महात्मा गांधी of India to January 19 from South Africa journey. 1916 Home Rule Movement was organized by the Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak Foundation of Banaras Hindu University by Madan Lal Malviya. Lucknow Pact Agreement between Indian National Congress and Muslim League. 1917 Mahatma Gandhi launched the Champaran Satyagraha in Bihar, first movement led by Gandhi. Montagu, Secretary of State for India, declared that goal of British government to introduce responsible government in India. अगले 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक्स. खेदा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेदा इन गुजरात. अगली है 1990 रावलात एक्ट पास. जालियानवाला बाग मैसेक्री on 13th April 1919 in Amritsar. Montagu Selmers for Reform in Government of India Act 1919 to create self-governing institution in India. अगले 1920 non-cooperation movement launched in 15 September by ANC Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi, first all Indian mass movements. 1921 Malabar Rebellion in Kerala. 1922 Mahatma Gandhi suspends non-cooperation movement after the Chori Chora incidents. अगली है 1923 established Swaraj Party by Motilal Nehru, C. R. Das. 1927 established Simon Commission under the chairmanship of Sir John Simons to review the performance of the Government of India Act 1990 and the study of constitutional reform in India. 1927 established of Simon Commission under the chairmanship of Balter Commissions to examine the relations between the power of British Raj and ruler of princely states. 1928 Simon Commission arrived in Bombay. All Indian Hartal was observed. Lala Lajpat Rai assaulted by police at Lahore. Nehru report recommend for the new constitution in India. Assassination of Sundars by Bhagwat Singh's. Bardoli Satyagraha under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. 1929 14th point of Jinnah proposed by Muhammad Ali Jinnah to safeguard the right and interest of Muslims in self-governing India. Deepavali declaration made by the Lord Irwins to grant dominion status to India. 1929 अगली है 1929 Sarat Act, Child Marriage Restraints Act, Purna Swaraj Declaration 19 December 1929 Lahore session. Indian National Congress demanded Purna Swaraj Declaration. 26 January 1932 the celebration as the Independent Day. Jawaharlal Nehru as the first president of Indian National Congress. 1930 first Independent Day observed 26 January 1930. First Roundtable Conference. Chittagong Army raid led by Surya Sen's. Mahatma Gandhi Civil Disobedience Movement starts. 1931 Bhagwat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed. Gandhi Arrow Pact was signed. Second Roundtable Conference. Jawaharlal Nehru drafted the resolution on fundamental right for the Karachi session in Indian National Congress and was presided by Sardar Vallabhbhai Patel. 1932 अगली 1932 British Prime Minister Ramsay MacDonald announced communal efforts. Gandhi first unto date. Pune Pact was signed, which horizons get reserved seats. Third Roundtable Conference was held. 1935 Government of India Act 1935 passed to introduce hierarchy in century, federal and autonomy of province. Introduced hierarchy in century, federal and autonomy in province. 1937 election held in India under the Act of 1935. Indian National Congress formed minister in 7 provinces. 1939 Subhash Chandra Bose became the elected president of ANC. 1939 and Tripura session he founded forward blocks. 1940 August offer declared during the Viceroy Lord Lintgo. It ensured dominant status to India. 1941 individual Satyagraha movement was launched. 1942 Crisp mission arrives. Congress reject proposal of post Quit India resolution on 8 August 1943 Mohan Singh formed Indian National Army. Subhash Chandra Bose assumed leader of Indian National Army in Singapore. 1946
Royal Indian Navy mutiny in Bombay. Cabinet mission arrived in Delhi to discuss transfer of power to Indian leadership. Patrick Lawrence was the chairman of cabinet missions. Lord Wavell invited Nehru to form an interim government. First session of the Indian Constitutional Assembly started 9 December 1946. अगले 1947 Mountbatten Plan और June 30 Plan for the partition of India, partition of British India into two dominant dominions. Indian Pakistan Independent Act 1947 July 18th 1947 India became free on 15 August and tricolor flag was hoisted on Red Fort Delhi. Thank you for watching. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel. अगर इस वीडियो देखकर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह वीडियो पाने के लिए कमेंट पर लिख दीजिए, ठीक है, और लाइक ठोकिए, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइब नहीं है, इसलिए आपका चैनल समझ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।